गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। ये टॉपिक हमने कल भी डिस्कस किया था, बट आज थोड़ा सा हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये आपके सिक्योरिटी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने रिसेंटली पहला सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल का, जो कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से हुआ है। अब इसके अंदर जो हमारा AD-1 मिसाइल है, जो हमारे सेकेंड जो है फेज़ के जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर्स टेस्ट हो रहे हैं, उसमें सेकंड फेज़ का फर्स्ट मिसाइल जो है वो टेस्ट किया गया है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम क्या है। तो बेसिकली हम एक एयर डिफेंस शील्ड देना चाहते हैं, ताकि कोई हॉस्टाइल एनिमी हमारे जो हैं वो अगर हमारे ऊपर मिसाइल से अटैक करें, चाहे वो न्यूक्लियर मिसाइल भी हो, उससे भी हम बच सकें। तो ये 2 टियर BMD सिस्टम है, मल्टी लेयर शील्ड होगी। समझ लो पूरे दिल्ली को प्रोटेक्ट कर रहा होगा, या फिर की जो सिटीज़ हैं या की इंस्टॉलेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मिसाइल्स लगाए जाएंगे। तो कोई भी अगर हायर ऑल्टीट्यूड पे ही जो है वो मिसाइल्स को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये दो तरह का सिस्टम है। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल, इसमें होगा क्या कि ये जो पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल्स होंगे, ये एक्सो एटमॉस्फेरिक ऑल्टीट्यूड्स कौन से होते हैं, 50 से 180 किलोमीटर की हाइट पर ही उनको जो है वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। और एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल्स जो हैं वो आपके एंडो एटमॉस्फेरिक, मतलब लगभग 15 से 40 किलोमीटर की हाइट पर ही उसको जो है वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। उसी में ही आपका आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल भी आता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कारगिल वॉर के बाद ये रियलाइज़ किया गया कि DRDO को ऐसे मिसाइल्स बनाने की ज़रूरत है जिससे हम अपने की सिटीज़ को या की इंस्टॉलेशंस जो है हमारी कंट्री को, उनको प्रोटेक्ट कर सकें। तो फेज़ 1 ऑफ प्रोग्राम जो है वो लगभग 2010s के ही एंड में जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। और सेकंड जो फेज़ है, आपको याद होगा अभी कल डिस्कस किया था कि जनवरी 2020 से शुरुआत हुआ था, और उसका जो है ये पहला AD-1 जो है वो टेस्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को की ये रिपोर्ट है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। और इसमें बताया गया है कि साउथ एशिया में जो है एजुकेशन की बहुत एक्सपेंशन हुई है पिछले 30 सालों में। लेकिन हर 7वां स्कूल, हर 10 में से हर जो 7 स्कूल्स हैं टोटल, वो प्राइवेट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस द्वारा बनाए गए हैं, मतलब गवर्नमेंट ने उन्हें नहीं बनाया है। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है वो हर साल निकाली जाती है, 2016 से इसको निकाला जा रहा है। इससे पहले इसका टाइटल होता था एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो मतलब 2002 से लेकर 2016 तक एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबलिंग मॉनिटरिंग रिपोर्ट निकाली जाती थी, लेकिन 2015 में इसको जो है वो रीनेम करके 2016 से ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको जो है अब कह सकते हो कि अब 2022 में इसकी 20th एनिवर्सरी है। और इस रिपोर्ट में इस बार कहा गया कि 1/3 ऑफ स्टूडेंट जो इंडिया में हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उनको कोई गवर्नमेंट से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उनको हेल्प मिलती भी नहीं है। और इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यहाँ हैं जो, या फिर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं एजुकेशन सिस्टम में साउथ एशिया में। इनफैक्ट 67,000 स्कूल्स, जो कि 97,000 स्कूल में से 67,000 जो स्कूल्स हैं जो 2014 से बनाए गए हैं, वो टोटल प्राइवेट है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम इज़ आर प्राइवेट। 46% ऑफ एडल्ट जो हैं वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है उनकी असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी स्कूल एजुकेशन देने की। और ये भी देखने को मिला है कि लगभग 61% ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स जो है वो प्राइवेट ट्यूशन्स को जो है वो अडॉप्ट करते हैं। पेरेंट्स की चॉइस में मोस्टली जो है इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन होती है। और इनएडिक्वेट सप्लाई और क्वालिटी ऑफ पब्लिक एजुकेशन जो है, जब वो पेरेंटल एस्पिरेशंस के साथ जब वो कंबाइन हो रही है, और प्राइवेट एजुकेशन उसकी वजह से जो है वो ग्रो हो रही है। तो एजुकेशन की जो है नॉन स्टेट एक्टर्स, या जो इनको आप कह सकते हो प्राइवेट एक्टर्स, उनकी वजह से जो है ग्रोथ होने की वजह से एजुकेशन का जो एक्सेस है वो इनइक्विटेबल हो रहा है कंट्री में, साउथ एशिया में रादर। तो यूनेस्को के बारे में भी देख लेते हैं। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। जब UN नहीं होता था, उससे पहले लीग ऑफ नेशन होता था। तो लीग ऑफ नेशन की एक एजेंसी होती थी, इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। उसी का ही सक्सेसर यूनेस्को बना। ठीक है, तो 5 ऐसे की एरियाज़ हैं जहाँ पर यूनेस्को काम करता है: एजुकेशन, नेचुरल साइंसेज, सोशल और ह्यूमन साइंसेज, कल्चर और कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। यूनेस्को को जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा गवर्न किया जाता है, और इसका यूनेस्को जो है वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का ही एक मेंबर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वन नेशन वन ITR फॉर्म। गवर्नेंस के लिए टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो CBDC जो है उन्होंने एक प्रपोज किया है कि एक सिंगल इनकम टैक्स की जो फॉर्म होगा सारे टैक्स पेयर्स के लिए। तो एक ड्राफ्ट फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया, और लोगों से इनपुट मांगे गए हैं कि कोई सजेशन या सुझाव हैं तो आप इस पर हमें दे सकते हो। तो अभी क्या होता है कि अभी लगभग 7 तरह के ITR फॉर्म्स होते हैं जो डिफरेंट कैटेगरी के ऑफ टैक्स पेयर्स जो हैं वो भरते हैं।
ठीक है। सैलरी क्लास जो है वो अलग टैक्स पे अलग तरह का फॉर्म भर रहा है, बिजनेस पर्सन अलग तरह का फॉर्म भर रहा है, प्रोफेशनल है तो वो अलग तरह का आईटीआर फॉर्म भर रहा है। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट चाहती है, रादर सीबीडीसी चाहता है कि सिर्फ एक ही तरह का टैक्स टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म हो, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स ट्रस्ट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बाकी सब टैक्स पेयर्स के लिए एक ही कॉमन आईटीआर फॉर्म हो। ठीक है। तो इससे होगा क्या कि एक तो टाइम कम लगेगा, लोगों को उलझन में नहीं फंसना पड़ेगा कि वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। एक ही वो फॉर्म होगा, उसमें वो अपना जो जो इनको इन्फॉर्मेशन बनती है वो उसमें फिल कर सकते हैं। तो और इनको जो है स्मार्ट डिज़ाइन किया जाएगा ताकि जो है पर्सन कंफ्यूज ना हो आईटीआर फॉर्म भरते हुए। ठीक है। सो यही जो है सीबीडीसी का प्रपोजल है, सीबीडीटी का प्रपोजल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जोजिला डे। आपके इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका इकोनॉमी का ही पार्ट है रादर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जोजिला डे जो है रिसेंटली कमेमोरेट किया गया है जोजिला वॉर मेमोरियल में द्रास में। और यहाँ पर हमने कमेमोरेशन ये की है कि ऑपरेशन बिसन हुआ था 1948 में, जब आइसी हाइट्स ऑफ जोजिला पास पर जो है इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी रेगुलर और इन्फिल्ट्रेटर्स को जो है वो धूल चटाई थी। ठीक है। तो एक हिस्टोरिक रीज़न है हमारे पास कि हमने उस समय पर उस ऐसी हाइट पर जोजिला पास की जैसी हाइट पर हमने टैंक्स पहुंचा दिए थे लड़ने के लिए। ठीक है। तो जोजिला पास के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये कश्मीर वैली को कोल्ड इंडस वैली डेजर्ट जो है लद्दाख का उसके साथ कनेक्ट करता है 434 किलोमीटर की स्ट्रेटजिक श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे के साथ। और ये पूरा का पूरा जो हाईवे आप कह सकते हो कि लगभग 11,575 फीट की हाइट पर चलता है। और बीआरओ का काम होता है वहाँ पर कि वो सर्दियों में इस हाईवे को मेंटेन रखे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीडियाट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस हैदराबाद ने जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को जो है वो इनिशिएट किया है, जिससे कि वो ऐसी जेनेटिक म्यूटेशंस को देखेंगे जिसकी वजह से पीडियाट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है। तो ये मिशन है एक पूरा पीडियाट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर पैन इंडिया लेवल पर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चला रहा है। और इसमें बहुत सारे और भी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स इसमें कोलैबोरेट करेंगे और ऐसे मेथड्स जो है वो बनाएंगे जिससे कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स जो है उनकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम, उसके लिए जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। ठीक है। तो ऑफ कोर्स हाई क्वालिटी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी जिससे कि पता लगेगा कि ऐसे रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते कैसे हैं और इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या ठीक कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में भी देख लेते हैं। एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन चुके हैं, लगभग 350 मिलियन लोग जो हैं वो इससे अफेक्टेड हैं वर्ल्ड वाइड। लगभग इंडिया में 70 मिलियन पीपल जो हैं वो इससे अफेक्टेड हैं, बहुत कॉमन है साउथ एशिया में। और 95% जो रेयर जेनेटिक डिसीजेज हैं उनके लिए कोई ड्रग भी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग करके देखें कि ये एमर्ज क्यों होते हैं। जब हमें ये पता लग जाएगा कि क्यों एमर्ज होते हैं, तब शायद हम कोई ऐसी जो है ड्रग या फिर कोई ट्रीटमेंट इसकी बना सकेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइनोसरस, आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टडी पब्लिश हुई है पीपल एंड नेचर जो है जर्नल में। इसमें कहा गया है कि जो राइनोसरस हैं उनके हॉर्न्स जो है वो स्मॉल होते जा रहे हैं विद टाइम बिकॉज उनकी हंटिंग की जाती है। तो ऑफकोर्स इनकी हंटिंग बहुत लंबे टाइम से हो रही है। तो जो है हॉर्न की लेंथ जो है वो हाईएस्ट डिक्लाइन उसमें देखा गया है सुमात्रन राइनो में। ठीक है। और लोएस्ट देखा गया वाइट राइनो ऑफ अफ्रीका में। तो हम ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसरस के बारे में भी देखते हैं। तो ये लार्जेस्ट ऑफ राइनो स्पीशीज़ हैं। इनका एक सिंगल ब्लैक हॉर्न होता है, ग्रे ब्राउन हाइड होती है इनकी स्किन, और वन ऑफ द 5 स्पीशीज़ ऑफ राइनोज हैं। अब हम देखते हैं बाकी 4 स्पीशीज़ के बारे में। वाइट राइनो जो है वो नेटिव है नॉर्थ है साउथ अफ्रीका का। ब्लैक राइनो है नेटिव ईस्ट और साउथ अफ्रीका का। जावन राइनो जो है वो सोंडा राइनो इसको हम कहते हैं जो है। और सुमात्रन राइनो जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जो इंडिया में पाया जाता है वो है ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो, जो कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और असम जैसे जो है स्टेट्स में एरिया में पाया जाता है। तो आईयूसीएन रेड लिस्ट पर इसका वल्नरेबल कैटेगरी का स्टेटस है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। सो इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने जो है अप्रूवल दिया है कि होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ईटानगर में बनाया जाएगा। इसका नाम बदलकर अब दोनी पोलो एयरपोर्ट कर दिया गया है। दोनी पोलो इसलिए किया गया है कि लोकल लैंग्वेज में दोनी सन को कहते हैं और पोलो मून को कहते हैं। तो एक तरह से हम उनकी रिच कल्चरल हेरिटेज के हिसाब से हम ईटानगर में इसका नाम दे रहे हैं। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और अरुणाचल प्रदेश का, और इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि इसका 2300 मीटर का रनवे है। यहाँ पर बड़े एयरक्राफ्ट को भी लैंड करवाया जा सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश का 3rd एयरपोर्ट है आफ्टर पासीघाट और तेजू एयरपोर्ट। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ओवरऑल देखें तो ये 16th एयरपोर्ट जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईला रमेश भट्ट। आपके ऑफ कोर्स ये टॉपिक भी आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईला रमेश भट्ट एक बहुत ही फेमस गांधीयन है, विमेन एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने जो कि फाउंडर भी रही हैं सेवा की। सेवा क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। रिसेंटली जो है वो उनका डिमाइज़ हुआ है। तो इनको हम जेंटल रेवोल्यूशनरी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सी वुमेन की लाइफ बदल दी है। इन्होंने सेवा को 1972 में फाउंड किया था। इवन ये मजदूर महाजन संघ, जो कि ऑफ कोर्स आपके अनासुया सारोभाई और महात्मा गांधी जी द्वारा बनाया गया था अहमदाबाद में। आपको पता होगा अहमदाबाद मेल स्ट्राइक 1918 का जो आपका जो है टॉपिक है, उसके लिए आपको याद होगा कि क्या थी अहमदाबाद मेल स्ट्राइक। तो उसी से ही रिलेटेड मजदूर महाजन संघ जो थी उस जो है उसका उसकी ये हेड करते हैं उसकी वुमेन विंग को, ठीक है। सो ये इवन साबरमती आश्रम मेमोरियल और प्रिजर्वेशन ट्रस्ट की भी जो है वो चेयरपर्सन रही हैं, और इनको पद्म भूषण, ब्राह्मण मैग्सेसे अवार्ड और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल प्राइज फॉर पीस भी मिल चुका है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is ballistic missile defense interceptor. So this topic is important for your security section. So India has recently conducted its first successful flight test of ballistic missile defense interceptor missile from the APJ Abdul Kalam Island of the Odisha's coast. So basically this test was conducted as part of this BMD program, and this program aims to provide an air defense shield to prevent the cities of India, or to prevent key installations of India from any type of hostile missiles, even the nuclear ones that Pakistan or China may launch against India. So basically, DRDO has been developing a two-tier BMD system which will provide multi-layered shield against incoming ballistic missile attacks, and it will destroy an incoming missile at a higher altitude and also and at an lower altitude also, which is a atmospheric level. So for the exo-atmospheric altitudes of 50 to 180 kilometers, Prithvi air defense missiles have been made, and for the endo-atmospheric altitudes of 15 to 40 kilometers, these advanced air defense missiles like Akash surface to air missiles have been made. Okay, so the basic aim is to protect cities like Delhi, Mumbai, or even key installations like big dams from being attacked by any enemy forces. So for that, this BMD program was started by the DRDO after the Kargil Review Committee's recommendation that it is important to prevent or to protect our key installations and cities. And the phase one of the program ended in late 2010s, but the phase 2, like we discussed yesterday, that it started in 2020 January, and it is the meant for development of a US third type system of missiles, and they are named as AD1 and AD2. So the next topic is Global Education Monitoring Report of 2022. This topic is important for your social issues. So as per UNESCO's recently released Global Education Monitoring Report, South Asia has undergone tremendous education expansion in the last 30 years. Currently, 7 out of every 10 new schools are being built in India. They are private independent institutions. So this actually Global Education Monitoring Report is an annual editorially independent report released by UNESCO and published by UNESCO since 2016. Since before 2016, it was called Education for All Global Monitoring Report. So it was published for the first time in 2002, and till 2015 it was published. But in 2016 it was discontinued and it was renamed as Global Education Monitoring Report. And if we look at if we consider the previous report also, then it is the 20th anniversary of this report. So what are the highlights of this report? So this report is saying that 1/3 of students in India are studying in private schools, but they receive no state help. And basically, so the non-state actors are heavily involved in all aspects of education systems in South Asia. If we also look at the figures, then since 2014, 97,000 schools have been established in India, and out of them, 67,000 are private. 46% of adults in the country believe that the government has the primary responsibility for delivering school education to the children, and there has been almost 61% almost 61% of secondary school students who are studying in any government or private aided schools, they are opting for private tuitions. The
parents are pressurizing, or they are preferring that their children would get English medium instruction. So when any inadequate supply and quality of public education is combined with parental aspirations, it gives rise to the private education market in India. And this expansion of private education to in India through non-state actors has led to inequality in education access to Indian people. So, what is UNESCO? It's a specialized agency of UN, and it is a successor to the previous League of Nations International Committee on Intellectual Cooperation. And this UNESCO was founded in 1945 to promote world peace and security. So, it works in five key areas: education, natural sciences, social or human sciences, culture, communication, and information. And it is governed by the General Conference, and it is also a part of the United Nations Sustainable Development Group. So the next topic is One Nation, One ITR form. This topic is important for our governance section. So CBDT has proposed that there should be a single income tax return form for all taxpayers, and a draft form has also been released in the public domain, through which all stakeholders can provide inputs regarding the changes that can be brought and made, so that this form can be made more efficient. So currently, you know that there are seven kinds of income tax return forms, which different category of taxpayers use to file their ITR returns. So almost the CBDT wants all taxpayers, except of course trusts and non-for-profit organizations, to use a common ITR form. This will of course reduce the time taken for the job by individuals and even non-business type taxpayers. It will be designed in such a smart manner so that people would find it user friendly, and they could fill the requisite information in the form without needing to be too uh, as expert, or too expert like in the filing of their own tax returns. Okay. So the next topic is Zojila Day. This topic is important for our infrastructure. That is the broader topic of economy section. So Zojila Day was recently commemorated at Zojila War Memorial near Dras, and it is celebrating the gallant action that was made by Indian troops in Operation Bison in 1948, whereby Indian Army launched or Indian Army recorded a historic win over Pakistani infiltrators at the icy heights of Zojila Pass, which is the gateway to Ladakh. And this Zojila Pass connects the Kashmir Valley with the cold Indus Valley Desert of Ladakh. So basically, it passes through the region of 134-kilometer strategic Srinagar Leh National Highway, and it runs at an elevation of almost 11,575 feet. In the winters, BRO is entrusted with the responsibility to clear and maintain this highway. So the next topic is pediatric rare genetic disorders. This topic is important for your social issues. So the Center for DNA Fingerprinting and Diagnostics, Hyderabad, has initiated an interdisciplinary approach so that they can decode those genetic mutations that which cause pediatric rare genetic disorders. So this mission is called Mission on Pediatric Rare Genetic Disorders, and it's a pan-India level initiative of the Department of Biotechnology, under which the center will collaborate with pediatric departments of several medical colleges, and unique methods will be adopted to perform genome sequencing or whole genome sequencing, so that we can identify that what is the cause of these rare genetic disorders. Currently, you know that there is no drug available. Almost 95% of these rare genetic diseases do not have any single approved drug for treatment. So once we understand the underlying cause behind this particular problem, probably we would be able to make a drug or treatment of these rare genetic disorders, which currently affect almost 350 million people worldwide and 70 million people in India. So the next topic is rhinoceros. So this is a topic for your environment section. So as per a study published by the People and Nature Journal of British Ecological Society, the horns of rhinoceros have become smaller over time because of the impact of hunting. So these rhinos have been hunted for their horns, and the rate of decline in horn length was highest in critically endangered Sumatran rhino, because it is hunted more than other forms of their other species of rhino. And
These observation also follows patterns which are seen in animals, that whenever the hunters target a particular organ or a part of any animal's body, then it starts shrinking. What is the greater one horned rhinoceros which is found in India? It is also called the Indian rhino. It is the largest of the rhino species. It has a single black horn and a gray brown hide with skin folds. It is one of the five species of rhinos. The other four are white rhino, which is native to North and South Africa; black rhino, which is native to East and South Africa; uh, Javan rhino, which is also called the Sunda rhino; Sumatran rhino, which is the critically endangered species of rhino. Okay, so greater one horned rhino are grazers, and they are found in Nepal, Bhutan, Pakistan, and Assam in India. They are considered as vulnerable category in IUCN Red List status. So the next topic is Doni Polo Airport of Itanagar. This topic is important for our economy and art and culture section both. So Union Cabinet has recently approved the naming of Holongi Greenfield Airport of Itanagar as Doni Polo Airport, because Doni in the local language means sun and Polo means moon. So that's why we want to pay our homage to the rich cultural heritage of the state. This airport has been developed by Airport Authority of India, and it is the Greenfield Airport, which is the first of its kind in Arunachal Pradesh, and it has a 2,300-meter runway, which means that even big aircraft can be landed in this region. So it is also the third airport in Arunachal Pradesh after Pasighat and Tezu airports, and Doni Polo Airport is considered as the 16th airport in Northeast India. So the next topic is Ila Ramesh Bhatt. This topic is important for your social issues. So Ila Ramesh Bhatt, which was a very renowned women rights activist, has recently passed away, and she's the founder of Self-Employed Women's Association, that is SEVA, and she changed the lives of lakhs of women. And she was the founder of SEVA, and which was founded by her in 1972. She was also heading the women's wing of Majdoor Mahajan Sangh, which is the textile labor association, which was founded by Anasoya Sarabhai and Mahatma Gandhi post Ahmedabad Bill strike in 1918. She was also the chairperson of Sabarmati Ashram Memorial and Preservation Trust. She has been a recipient of Padma Bhushan, Raman Magsaysay Award, and even the Indira Gandhi International Prize for Peace. Okay, so these were our topics for today. You please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.